ओके सो बस Neues lernen wir heute. आज क्या नया पढ़ने वाले हैं? Heute lernen wir ein ganz wichtiges Thema. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा important है. Heute lernen wir im Lektion 3 Konjunktionen. Pronounce with me. Konjunktionen oder auf Konjunktionen. Englisch nennt man auch Konjunktionen. Conjunctions oder Connectors. Nennt man das auch Konnektoren. Pronounce with me. Konnektor. Konnektor oder Konnektoren. In der deutschen Grammatik, German Grammar में, es gibt viele Konjunktionen oder Konnektoren. In German grammar, we have a lot of connectors or conjunctions. Und Konjunktionen sind ganz wichtig. ये बहुत ही important concept होता है जर्मन ग्रामर का. Heute lernen wir आज हम देखेंगे कि was sind Konjunktionen? Conjunctions क्या होती है? Und was machen die Konjunktionen? Conjunctions actually करती क्या है? Zuerst, was sind Konjunktionen? Conjunctions क्या होती हैं? Zuerst haben wir ein Verb verbinden. Pronounce with me. Verbinden. Verbinden means uh, to connect. To connect. Okay. Satz bedeutet Sentence. Und wenn wir mehr als zwei Sätze haben, when we have two or more sentences, dann sagt man Z से एक से ज्यादा जुमलों को क्या कहा जाता है? Z से. Was sind Konjunktionen? Conjunctions क्या होती हैं? In German Grammar, Conjunctions oder Konjunktionen sind Wörter. ये ऐसे words होते हैं die zwei Z से verbinden. These are the words. ये ऐसे words होते हैं that connect two main clauses or sentences. जो दो sentences को आपस में connect करते हैं. Und im deutschen Grammatik, German Grammar में haben wir viele Konjunktionen oder Konnektoren. We have a lot of connectors in German. इनको conjunctions भी कहा जाता है. Und nennt man auch Konnektoren. Konnektoren या Konnektor, Connector भी कहा जाता है. Was machen die Konjunktionen? Conjunctions क्या करती हैं? Konjunktionen verbinden zwei Sätze. ये दो sentences को आपस में connect करती हैं. Und haben wir viele Konjunktionen, बहुत सारी Conjunctions हैं. Zum Beispiel weil, das, wenn, haben wir viele Konjunktionen in der deutschen Grammatik. German Grammar में बहुत सारी Conjunctions हैं. Das ist Satz 1, ये है Sentence 1. Und das ist zweiter Satz, ये है Sentence 2. Und Konjunktionen verbinden zwei Sätze zusammen. और conjunctions क्या करती हैं? इन दोनों sentences को या दो clauses को आपस में कनेक्ट कर देती हैं. फरशीन जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अजय, अली, नवाज, काशिफ, इकरा, Yeah. फरदीन, हसन, Yes, मंसूर, sir. किरण, Yes, सुफियान, sir. नवीद, सुहेब, Klar. कौसर, हरीब, alles klar? Okay, Alles dann. klar? Alles klar. In der deutschen Grammatik, German Grammar में, haben wir zwei Arten von Konjunktionen. We have two types of conjunctions. We have two types of conjunctions. Zuerst koordinierende Konjunktionen. Koordinierende Konjunktionen bedeutet coordinating conjunctions. Und zweite Art, दूसरी type कौन सी होती है? Unterordnende Konjunktionen. Unterordnende Konjunktionen bedeutet subordinating conjunctions. Was sind koordinierende Konjunktionen? What are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions oder coordinating connector, coordinating connectors क्या होते हैं? In deutschen Grammatik haben wir viele Konnektoren, बहुत सारे connectors हैं. Und was macht ein Konnektor? एक connector क्या करता है? Ein Konnektor verbindet zwei Sätze.
ये कनेक्टर दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन ऐसे कनेक्टर्स दी स्वाई हाउप्ट जेट से फेबिंडन, ऐसे कनेक्टर्स जो दो हाउप्ट जाट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेगंडे कनेक्टोगन oder कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स। कोऑर्डिनेटिंग, हाँ, कनेक्टर्स और हाँ कंजंक्शंस। डेंकिंस, या आप ये सोच रहे होंगे कि was in Hauptsatz, ये Hauptsatz क्या होता है? bis jetzt अभी मेन तक, सेंटेंस। बिल्कुल, bis jetzt अभी तक haben wir viele Sätze gesehen, हमने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे। wie formuliert man ein einfacher Satzbau, कैसे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया जाता है? was kommt zuerst und was kommt danach, पहले क्या आता है और बाद में क्या आता Subjekt, है? zuerst kommt ein Subjekt, dann Verb, ein Verb und am Ende steht D, immer ein Objekt. immer Objekt. Das ist ein Hauptsatz, यही तो एक Hauptsatz है। और Hauptsatz को इंग्लिश में कहा जाता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज या मेन सेंटेंस, Hauptsatz। Haupt, Haupt means main und Satz means sentence Sentence. या clause। आपने सुना होगा Haupt, Hauptbahnhof। So was bedeutet Hauptbahnhof? Hauptbahnhof means main station या Main central station. station. So Haupt means main, Satz means sentence. So Hauptsatz means main clause या main sentence. Bis jetzt अभी तक haben wir viele Sätze gelernt. हमने बहुत सारे sentences को सीखा. Zum Beispiel, for example, ich gehe zur Arbeit, मैं काम पर जा रहा हूँ. Ich esse बिरयानी, मैं बिरयानी खा रहा हूँ. Ich gehe ins Fitnessstudio, मैं जिम जा रहा हूँ. Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich komme morgen, मैं कल आऊँगा. Ich schlafe, मैं सो रहा हूँ. Ich arbeite, मैं काम कर रहा हूँ. Haben wir viele Sätze gesehen, हमने बहुत सारे sentences देखे. Alle Sätze sind Hauptsätze, वो सारे sentences क्या थे? Hauptsatz. तो अभी तक जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने सीखा वो Hauptsatz ही था। Hauptsatz ist nicht etwas Neues, ये कुछ नया नहीं है। haben wir das schon gelernt, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। Yes, So sir. ऐसे कनेक्टर्स die zwei Hauptsätze verbinden, ऐसे कनेक्टर्स जो दो मेन क्लॉजेस को या दो Hauptsatz को आपस में कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्टर्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स या coordinating conjunctions. Alles klar? Und, Alles klar. und der Satzbau bleibt gleich. और उन दो sentences को आपस में कनेक्ट करने से जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। Der Satzbau bleibt gleich. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है? बिकॉज कुछ कनेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जब वो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। Aber nicht in koordinierende Konjunktionen, not in coordinating connectors, coordinating connectors में ऐसा नहीं होता। Coordinating connectors verbindet, koordinierende Konnektor verbindet zwei Hauptsätze, ये दो मेन क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर देता है। Und der Satzbau bleibt gleich, और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। Verstehen Sie? यहाँ तक क्लियर है सबको? Schauen wir ein paar Yes, sir. Beispielsätze mit koordinierende Konnektoren. Im deutschen Grammatik, German Grammar में haben wir viele Coordinating Konnektoren, बहुत सारे
कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स या कंजंक्शन है. Zum Beispiel und was bedeutet und का क्या मतलब है? Und means And and, ganz einfach. Oder, was bedeutet oder? or Oder means or. Aber, aber means but but but. Then means then because. because वो जो then वाला then है उसको जर्मन में कहा जाता है dann. ओके, उसको dann कहा जाता है. Und das ist kein Konnektor, ये कनेक्टर नहीं है. ओके, das ist anderes, ये कुछ मुख्तलिफ है. das lernen wir später, इसको बाद में पढ़ेंगे. सो जो इंग्लिश में देन होता है उसको जर्मन में दन कहा जाता है, जबकि देन को कहा जाता है बिकॉज. am Ende Sonden pronounced me Sonden. London. Sonden bedeutet rather, जिसको उर्दू में कहा जाता है नेंट मान के बजाय. के बजाय मैं ये नहीं करता, इसके बजाय ये करता हूँ. Ich lerne, ich lerne kein Deutsch, मैं जर्मन नहीं सीखता. Sondern बल्कि, बिल्कुल बल्कि, इसको बल्कि भी कहा जाता है. बल्कि ich lerne इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ. फर्स्टीन जी, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? Yes. हाँ, फरदीन, हसन, मंसूर, महफूज. हाँ, महफूज. ओके हसन. जी मैंने पूछना था देन और वाइल में क्या फ़र्क है, जो बिल्कुल कि मैंने बिल्कुल. पढ़ा था while शुरुआत में. bedeutet auch because. while का मतलब भी होता है because. ओके, लेकिन while दूसरे कनेक्टर्स की कैटेगरी में आता है, while इन कनेक्टर्स की कैटेगरी में आता है. ओके, und das lernen wir später, इसको आगे चलकर कवर करेंगे हसन. ओके, जी while और then के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक लेक्चर है, उसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह. ओके, sehr gut. So und means and, oder bedeutet or, aber means but, then means because, sondern means rather. सुहेब, हाजिर ख्वाह. सर जो डन है ये कनेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आता. नहीं, ये done कंजंक्शन is है. kein Konnektor, ये कनेक्टर नहीं है. ओके सुहेब, ओके, ये done is ein Adverb, ये एक एडवर्ब है. ऑलराइट. कॉन्जंक्शनल एडवर्ब, कनेक्टिंग एडवर्ब है ये. ओके, und das lernen wir später, इसको आगे चलकर कवर करेंगे. done is ein Adverb, एक एडवर्ब है. ओके, sehr gut. So haben wir 5 Konjunktionen gesehen. हमने 5 Conjunctions देखी. Und, oder, aber, denn und sondern. Diese Konjunktionen sind koordinierende Konjunktionen. These conjunctions are coordinating conjunctions or coordinating connectors. Was machen diese Konnektoren? ये connectors क्या करते हैं? wer kann mir sagen? कौन बताएगा? verbinden zwei Beiden Sätze. zwei Sex. Hauptsätze. Diese Konnektoren verbinden zwei Hauptsätze. ये दो Hauptsatz यानी main clauses को आपस में connect करते हैं. Und vergessen Sie nicht, और इस चीज को मत भूलिएगा, der Satzbau bleibt gleich. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोनों sentences का वो सेम रहता है. Dann schauen wir ein paar Beispielsätze, कुछ example sentences को देखते हैं. Mit diesen Konnektoren, with these connectors. Auf dieser Seite haben wir ganz einfache Satz. बहुत simple सा sentence है. Und der Satz hat zwei Teile. इस sentence के दो parts हैं. Zuerst, सबसे पहले, ich kaufe Brot. Das ist ein Satz. ये एक sentence है. Ich kaufe Brot. मैं ब्रेड खरीदता हूँ या मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ. Und zweiter Satz, दूसरा sentence क्या है कि kaufst Käse. Du kaufst Käse means तुम चीज खरीद रहे हो. In diesem Satz, इस sentence में
haben wir zwei Sätze, 2 Sentences हैं. Ich kaufe Brot in diesem Satz. Was ist ich? Ich क्या है? Ich ist ein Subjekt. Sehr gut. Kaufe ist ein Verb. Und Brot ist ein Objekt. Und dieser Satz heißt Hauptsatz. यही तो Hauptsatz यानी Main Clause कहलाता है. Was ist Hauptsatz? Hauptsatz क्या होता है? Hauptsatz hat 3 Elementen. Hauptsatz में 3 Elements होते हैं. Zuerst kommt immer ein Subjekt. सबसे first position पर हमेशा क्या आएगा? Subject. Dann kommt ein Verb oder konjugierte Verb auf Position 2. Second position पर conjugated verb आएगा. Und am Ende steht immer ein Objekt. और end में क्या होगा? एक Object होगा. Das ist ein Hauptsatz. Du kaufst Käse. तुम ब्रेड खरीद रहे हो. In diesem Satz, du ist ein Subjekt, kaufst ist ein konjugiertes Verb und Käse ist ein Objekt. Das ist auch ein Hauptsatz. ये भी एक Main Clause है. Und was ist und क्या है? Und ist ein koordinierender Konnektor. Und क्या है? एक coordinating connector. Was macht und क्या करेगा? Und verbindet zwei Hauptsätze. उनने इन दोनों Main Clauses को आपस में connect कर दिया. Und der Satzbau bleibt gleich. और आपने देखा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो सेम रहा. ऐसा नहीं है कि उन के आने से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया हो, सब्जेक्ट आगे पीछे हो गया हो, ऑब्जेक्ट पहले आ गया हो, वर्ब बाद में चला गया हो. ऐसा नहीं हुआ. So, was sind koordinierende Konjunktionen? Coordinating connectors क्या होते हैं? Koordinierende Konjunktionen oder coordinating connectors verbinden zwei Hauptsätze. ये दो main clauses को आपस में connect करते हैं. Ich kaufe Brot, मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ. Und du kaufst Käse, तुम चीज खरीद रहे हो. Alles klar, verstehen Sie? Dann und aber. Aber ist auch ein koordinierender Konnektor. Aber भी एक coordinating conjunction है. Und aber verbindet auch zwei Hauptsätze. Aber भी दो main clauses को आपस में connect करता है. Zum Beispiel, ich bin müde. मैं थका हुआ हूँ. Ein Satz, एक sentence. Und zweiter Satz, दूसरा sentence क्या है? Ich arbeite. मैं काम कर रहा हूँ. Ich arbeite. Verbinden wir beide Sätze mit einem Konnektor. अब हम इन दोनों sentences को connect करते हैं mit einem Konnektor, with a connector. Und das Konnektor ist aber. और connector क्या है? aber. Ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ. aber, लेकिन ich arbeite, मैं काम कर रहा हूँ. aber ist auch ein coordinating connector. aber भी एक coordinating connector है. Verstehen Sie? Alles klar? Ajay, Ariba, Mahfuz, Ali Nawaz, Sufyan, Naveed, Yasa, Suhaib, Kiran, Kausar, Ikra Khan, Kashif. Alles klar? Fardeen, Ali Nawaz. Yes, sir. Okay, sehr gut. Wenn etwas nicht klar ist, कोई भी चीज़ अगर ना समझ आए, dann können Sie mich einfach fragen. Simple आप पूछ सकते हैं. Dann oder. Was bedeutet oder? Oder means But. or. Ja. Oder bedeutet but. Aber. Sorry. Aber bedeutet but. Okay. Sorry. aber bedeutet but means Yes, sir. लेकिन. जबकि Oder. oder means or या फिर या. Oder verbindet auch zwei Hauptsätze. Oder भी दो main clauses को आपस में connect करता है. Zum Beispiel, wir gehen ins Kino. हम सिनेमा जा रहे हैं. Oder ja. Wir bleiben zu Hause. या हम घर पर रुकेंगे. Wir gehen ins Kino. Ein Satz.
Wir bleiben zu Hause. Zweiter Satz. Und oder. Beide Hauptsatz. Beide sind Hauptsätze. ये दोनों main Ja. clauses हैं. Und oder verbindet beide Hauptsätze. Oder ने इन दोनों main clauses को आपस में connect कर दिया. Verstehen Sie? Yes, Ja. sir. Dann sondern. Was bedeutet sondern? Sondern means बल्कि. Rather. या Rather. बल्कि. Okay. Ich trinke keinen Kaffee. मैं कॉफी नहीं पीता. Ich trinke keinen Kaffee. Sondern बल्कि. Ich trinke Tee. मैं चाय पीता हूँ. Ich lerne kein Deutsch. मैं कोई जर्मन नहीं सीखता. या मैं जर्मन नहीं सीख रहा. Sondern बल्कि. Ich lerne English oder Spanisch. मैं इंग्लिश या स्पेनिश सीख रहा हूँ. Sondern ist auch ein Coordinating Connector. Sondern भी एक Coordinating Connector है. Und verbindet zwei Hauptsätze और ये भी दो मेन क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है. Alles klar, verstehen Sie? I hope कि अब क्लियर होगा आपको कि was is coordinating connector या coordinating conjunction. Coordinating conjunctions क्या होती हैं और जर्मन में टोटल 5 coordinating conjunctions हैं. Okay, Yes, sir. sehr gut. Dann kommen wir auf unterordnende Konnektoren. Unterordnende कनेक्टोर और सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स. आप इसको ऐसे याद रखें. सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स. Was sind subordinating Konnektoren? Subordinating Connectors क्या होते हैं? Subordinating Konnektor verbindet einen Hauptsatz mit einem Nebensatz. ये ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो दो मेन क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करते. Subordinating Konnektoren verbinden nicht zwei Sätze. ये दो मेन सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करते. sondern बल्कि. Subordinating Konnektoren verbinden einen Hauptsatz mit einem Nebensatz. ये एक Hauptsatz को एक Nebensatz के साथ कनेक्ट करता है. Was ist ein Nebensatz? Kennen wir schon. ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि was ein Hauptsatz ist. एक Hauptsatz क्या Yes, होता है. sir. Aber heute lernen wir. आज के लेसन में हम सीखेंगे कि was ein Nebensatz ist. Nebensatz क्या होता है. Und vergessen Sie nicht, इस चीज को मत भूलें कि in einem Nebensatz, एक Nebensatz में, das konjugierte Verb geht immer am Ende. Was bedeutet Haupt? Haupt का क्या मतलब होता है? Haupt means Main. main. So was bedeutet Hauptsatz? Hauptsatz का क्या मतलब हुआ? Main sentence. Main sentence. clause या main clause. sentence. Was bedeutet neben? Neben means next. Neben कहा जाता है next को. Neben means next. Next. Und Satz means sentence. Sentence. So Nebensatz means next sentence Sentence. or Next clause. next clause. या इसको और भी एक नाम दिया जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, subordinate Coordinating. subordinate clause. Subordinate clause. Verstehen Sie? So Nebensatz und Hauptsatz. Was ist Nebensatz? Wie formuliert man einen Nebensatz? Nebensatz को कैसे लिखा जाता है, das lernen wir gleich. इसको अभी देखते हैं. Hauptsatz ist ein independent clause. इसको इंग्लिश में कहा जाता है independent clause. ये independent clause होता है, जबकि Nebensatz को एक Dependent dependent clause. क्लॉज कहा जाता है. डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है? सर इसके
इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो सेंटेंस कंप्लीट होता है, पर जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसको हाउटसाट की नीड होती है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। Sehr gut, sehr gut. Nebensatz braucht einen Hauptsatz. Nebensatz एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि Nebensatz braucht einen Hauptsatz. Nebensatz को Hauptsatz. हमेशा एक Hauptsatz की जरूरत होती है। Ohne Hauptsatz, without main clause, without Hauptsatz gibt's keinen Nebensatz. Keinen. There is no dependent Nebensatz. clause. There is no Nebensatz. Hauptsatz के बगैर Nebensatz को नहीं लिखा जा सकता। Aber लेकिन Hauptsatz kann alleine kommen. Hauptsatz अकेला आ सकता है। आ सकता है। Hauptsatz braucht keinen Nebensatz. Hauptsatz को किसी Nebensatz की जरूरत नहीं होती। Hauptsatz को independent clause इसीलिए कहा जाता है। Zum Beispiel, for example, ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीख रहा हूँ। Das ist ein Hauptsatz. ये एक main clause है। And this sentence doesn't need any sentence to complete its sense. अपने sense को complete करने के लिए इस sentence को किसी दूसरे sentence का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। Verstehen Sie? लेकिन Nebensatz एक subordinating clause कहलाता है जो कि dependent clause भी कहलाता है। Und Nebensatz kommt immer mit einem Hauptsatz. Nebensatz हमेशा Hauptsatz के साथ ही लिखा जाता है। Ohne Hauptsatz, without main clause, gibt's keinen Nebensatz. There is no any Nebensatz. Verstehen Sie? Alles klar? Ajay, Yes, Ali Yes, Nawaz, sir. klar. Fardeen, Yes, Hariba, understood. Mahfouz, Fardeen, alles klar? Suhaib, Ikra, Understood, sir. Kiran, Yasa, Sufyan, alles klar? alles Kausar, klar. Kashif? Yes, Okay, sir. okay, sehr gut. Dann schauen wir, अब हम देखते हैं कि was sind unterordnende Konnektoren और subordinating connectors. आप इसको subordinating connectors के नाम से याद रखें। In der deutschen Grammatik, German Grammar में haben wir viele subordinating Konnektoren. We have a lot of subordinating connectors. बहुत सारे subordinating connectors होते हैं। Zum Beispiel zuerst सबसे पहले while महफूज हार्ड की फ्राग शायद महफूज ने पूछा था कि was is while क्या है। Was bedeutet while का क्या मतलब है? While bedeutet Because 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 haben wir gesehen अभी हमने देखा कि then bedeutet auch then because then का मतलब भी होता है because because und haben wir gerade gesehen अभी हमने देखा कि while bedeutet auch because while का मतलब भी होता है because yeah. keine Unterschied कोई डिफरेंस नहीं है zwischen beide इन दोनों में। सेंटेंस का डिफरेंस होता है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि then एक कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है जबकि while एक सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है। subordinating. then verbindet zwei Hauptsätze, ये दो then जो है वो दो मेन क्लॉजेस को या दो हाउटजार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है जबकि while एक सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है जो क्या करता है while verbindet einen Hauptsatz Nicht mit Haupt- einem Und Mit einen Nebensatz. mit einem Nebensatz. Nebensatz जो एक Hauptsatz को एक Nebensatz के साथ कनेक्ट करता है। Gibt's gibt's keine zwei Hauptsätze, यहाँ दो मेन क्लॉजेस नहीं होते। Gibt's einen Hauptsatz und einen Nebensatz. Alles klar? Okay. Und was ist der Unterschied alles zwischen klar. then und while? In welcher Situationen benutzt man then? किन situations में then का इस्तेमाल किया जाता है und wann kommt while कब आता है? Das alles lernen wir später. इन सब चीज़ों को आगे चलकर कवर करेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि haben wir auch ein ganz wichtiges Thema auf while के ऊपर एक पूरा टॉपिक है। ओके इन सब कनेक्टर्स के ऊपर बहुत डिटेल में कंप्लीट टॉपिक्स हैं
फिलहाल सिर्फ हम एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि कनेक्टर्स क्या होते हैं. While means because. Thus. Pronounce with me, thus. Thus means Thus. that. 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 Then when. When means If. if. This is a conditional connector. ये conditional connector है when. Und benutzt man meistens diese Connector im Alltagsgespräch. Daily Life Conversation में इस कनेक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं जर्मन सीखूंगा. अगर कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस में इस कनेक्टर का यूज किया जाता है. देन ob bedeutet Weather. weather, Weather. and we use ob in the situations of uncertainty. Uncertainty की situations में zum Beispiel wenn du dich sicher bist, जब आप किसी भी सिचुएशन में Sure हो. श्योर ना हो. No. मैं नहीं जानता. शाबाई ने पार्टी में तरफ एक पार्टी है. Kommt Suhaib heute? क्या सुहेब आ रहा है? Nein, ich weiß nicht. मैं नहीं जानता ob Suhaib kommt. Ob Suhaib kommt means मैं नहीं जानता कि सुहेब आ रहा है या नहीं आ रहा. Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure. अगर आप किसी भी सिचुएशन में अनश्योर है या अनसर्टेन है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उस सिचुएशन की, then benutzt du immer ob. आप हमेशा ob का इस्तेमाल करते हो. ओके. then obwohl. Obwohl means Although. even though और although. बिल्कुल. Yeah. जिसको उर्दू में कहा जाता है हालांकि. हालांकि. Ich gehe raus. मैं बाहर जा रहा हूँ. Obwohl, हालांकि es regnet, बारिश हो रही है. Obwohl es regnet, हालांकि बारिश हो रही है. हालांकि मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne Deutsch. हालांकि मैं थका हुआ हूँ. Obwohl ich müde bin. Ich müde bin. Okay, so obwohl, ob, wenn, das, while. Alle sind subordinating Connectoren. ये सब क्या है? Subordinating connectors हैं. Und was ist subordinating Connector? Und was macht dieser Connector? ये connector क्या करते हैं? Diese Konnektoren verbinden. Verbinden Diese Haupt- Konnektoren Sätze verbinden einen Nebensatz. Hauptsatz mit einem Nebensatz. ये ऐसे connectors होते हैं जो एक main clause को एक Nebensatz, Hauptsatz को Nebensatz के साथ connect करते हैं. Das ist ein ganz wichtiges Thema. ये बहुत important topic है. Deshalb spreche ich langsamer. इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ अनक्लियर ना रहे. एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे कोई मुश्किल नहीं होगी. ओके, sehr gut. Dann, was ist Hauptsatz und was ist Nebensatz? Was ist der Unterschied zwischen beide? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Kennen Sie Hauptsatz? Kennen Sie nur Hauptsatz? फिलहाल तो आपको मेन क्लॉज का पता है. Sag mal, मुझे बताएं कि was ist ein Hauptsatz? Hauptsatz के बारे में जो भी आपको पता है आप मुझे बताएं एक एक करके. Hauptsatz एक coordinating conjunction है. ये Hauptsatz नहीं यार. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कनेक्टर्स होते हैं जो हाउप्टजार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. हाउप्टजार्ट्स इटसेल्फ कंजंक्शन नहीं है. कंजंक्शंस तो अलग होती हैं. कंजंक्शंस तो और होती हैं जैसे उंड है, ऑडा है, आबा है, वाइल है, देन है, ऑब है. ये सब कंजंक्शंस होती हैं. ओके, और ये हाउप्टजार्ट्स को दूसरे हाउप्टजार्ट से कनेक्ट करती हैं.
कनेक्ट करते हैं। ओके, वो तो अलग टॉपिक है। सर हाफ हाफ चार्ट्स में चार्ट्स वर्ब की पोजीशन सबसे पहले It's a होता है, simple sentence. मेन एक हाफ सेंटेंस चार्ट्स मेन सेंटेंस होता है हाउट और ये चार्ट्स को इंडिपेंडेंट होता है। जैगूड, इसको मेन क्लॉज कहा जाता है या मेन सेंटेंस, और ये एक इंडिपेंडेंट जैगूड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस It's a complete sentence. नेबेंस आर बिल्कुल It doesn't. वर्ब किसी की भी पोजीशन सर कोई भी इनवर्स वाई अपने आप में मुकम्मल होता है। बिल्कुल। और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है हाउट चार्ट्स का? नॉर्मल ऑर्डर सब्जेक्ट सुब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट subject वर्ब ऑब्जेक्ट verb drei plus drei एलिमेंट, Elements. 3 एलिमेंट्स होते हैं। ganz ja, einfach। और याद रखिएगा ein wichtiges देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। in einem Hauptsatz, एक मेन क्लॉज में, das konjugierte Verb steht immer auf Position 2। जो so कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन एक्वायर करेगा, हमेशा। Das ist ein Hauptsatz, ये होता है एक मेन क्लॉज। Verstehen Sie? Alles klar? Okay, dann ja, kommen wir auf Nebensatz. Was ist Nebensatz? फिलहाल आपको इतना पता है कि नेबेनजार्ट्स को कहा जाता है सबऑर्डिनेट Subordinate. क्लॉज, और नेबेनजार्ट्स इज dependent अ होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ये Dependent. एक डिपेंडेंट होता है। नेबेनजार्ट्स ब्राउcht einen Hauptsatz, इसको एक मेन क्लॉज की जरूरत होती है। की जरूरत होती है। सही ohne Hauptsatz, without main clause, gibt es keinen keine Nebensatz. There is no Nebensatz. कोई Nebensatz नहीं लिखा जा सकता without main clause, without Hauptsatz. Okay? Und sprechen wir über Satzbau. अब हम Satzbau यानी Sentence Structure को देखते हैं। Wie formuliert man einen Nebensatz? Nebensatz को कैसे formulate किया जाता है? Was kommt zuerst und was kommt danach? पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? Zuerst kommt immer ein Subjekt. सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट dann plus Objekt, object वर्ब अमेंड plus verb und verb am Ende steht immer ein verb konjugiertes Verb. conjugated verbs Conjugated Verb means conjugated verb steht immer am Ende. काफी लोग सोचते हैं इन मोडाल वर्ब जेड से मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस में स्टेट das Hauptverb auch am Ende। मेन वर्ब तो मॉडल वर्ब्स में भी एंड में आता है, तो मॉडल वर्ब्स के लेकिन सेंटेंस उसमें स्ट्रक्चर में और नेबेनजार्ट्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या फर्क हुआ? वो सर मुडाल conjugate नहीं वर्ब हुआ हुआ होता का मुडाल वर्ब आ जाता है मेन वर्ब की प्लेस। conjugate नहीं होता modal verb Sehr gut, वो अपनी असल फॉर्म में आता है। sehr gut। मॉडल वर्ब्स के सिनेरियो में जो मेन वर्ब आखिर में होता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, अगर आपको याद हो। Das Infinitivverb steht immer am Ende mit einem Yes. Modalverb, Modelverb के साथ। Aber in einem Nebensatz में conjugated das conjugates Verb, conjugated conjugated verb steht immer am Ende। इस सिनेरियो में जो एंड में होगा वो इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होगा बल्कि वो कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा। yes What is conjugated verb? Conjugated verb क्या होता है? ich lerne du lernst Ich lerne, du lernst, lernt। er lernt sie We lernen change the ending of the verb। हम We वर्ब की एंडिंग को चेंज करते हैं Change अकॉर्डिंग करते टू द सब्जेक्ट, according to the subject yeah सब्जेक्ट के हिसाब से। एंड दिस वर्ब इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड वर्ब। उस वर्ब को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड वर्ब। ओके, alles klar? Dann alles gut gehen wir weiter। आगे चलते हैं। Hier ist der Unterschied zwischen Hauptsatz und Nebensatz। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है Hauptsatz में और Nebensatz में। Zuerst schauen wir Hauptsatz। सबसे पहले देखते हैं मेन क्लॉज को। Was ist Hauptsatz? Hauptsatz can stand alone। Hauptsatz kann allein kommen। ये अकेला लिखा जा सकता है। Hauptsatz braucht keinen Nebensatz। इसको किसी नेबेनजार्ट्स की जरूरत नहीं होती। It can stand alone।
This is, or Hauptsatz is a independent clause. It is an independent clause. Und das konjugierte Verb steht immer auf Position 2 in einem Nebensatz, in einem Hauptsatz. Hauptsatz में जो conjugated verb है वो हमेशा second position पर रहता है, immer auf Position 2. Zum Beispiel, for example, ich wohne in Berlin. In diesem Satz ist Sentence में ich ist ein Subjekt, Subjekt. wohne ist ein Verb Verb und Berlin ist ein Objekt. is an object. Yeah. Verstehen Sie? यहाँ तक क्लियर है सबको? इकरा, हसन, मंसूर, Yes, sir. फरदीन, अली नवाज, सुहेब, Yes, alles sir. klar? Alles Yasa, Sufyan. Yes. Alles klar. Okay, sehr gut. Dann kommen wir auf Nebensatz. Nebensatz cannot stand alone. इसको अकेला नहीं लिखा जा सकता. This is a dependent clause. ये एक dependent clause होता है. Und Nebensatz kommt immer mit einem Hauptsatz. ये हमेशा अपने साथ एक Hauptsatz को follow करता है. Und das konjugierte Verb steht immer am Ende in einem Nebensatz. Nebensatz में जो conjugated verb है वो हमेशा sentence के end में होता है. Zum Beispiel, ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Das ist ein Hauptsatz, ये एक main clause है. Aber लेकिन in einem Nebensatz, Nebensatz में wohne geht immer am Ende. जो wohne है या हर वो वर्ब जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद होता है हाउप्टजार्ट्स में, वो नेबेनजार्ट्स में कहाँ चला जाता है? एंड में. End पर. Alles klar, verstehen Sie? And always remain in conjugated form. और हमेशा conjugated रहता है. ऐसा नहीं है कि मॉडल वर्ब की तरह आप उसको भी इन्फिनेटिव बना दें, ऐसा नहीं है. Verstehen Sie? समझ आया सबके? Was ist Nebensatz, Yes, sir. was ist Hauptsatz und was ist der Unterschied zwischen beide? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Alles klar? Okay, dann. Alles klar. Nebensatz cannot stand alone. It always comes with a connector. ये हमेशा एक कनेक्टर को कैरी करता है. Zum Beispiel haben wir viele Konnektoren gesehen. अभी हमने बहुत सारे कनेक्टर्स देखे. Haben wir weil gesehen, हमने while देखा. Das, obwohl, wenn. Haben wir viele Konnektoren gesehen. हमने बहुत सारे कनेक्टर्स देखे. ये कौन से कनेक्टर्स हैं अगर आपको याद हो? Subordinating 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 connectors. connectors, subordinating connectors or subordinating conjunctions. और याद रखिएगा कि Nebensatz kommt immer mit einem Konnektor. जो Nebensatz है वो हमेशा अपने साथ एक कनेक्टर को फॉलो करता है. कनेक्टर कौन से होंगे? हमेशा सबऑर्डिनेटिंग होंगे. हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स होंगे. Zum Beispiel यहाँ while भी हो सकता है, यहाँ ob भी हो सकता है, यहाँ when भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कनेक्टर. Zuerst सबसे पहले kommt ein Konnektor. सबसे पहले एक कनेक्टर आएगा. Dann kommt einen Nebensatz. उसके बाद एक Nebensatz आएगा. Und wissen Sie schon, ये आप सबको मालूम है कि wie man einen Nebensatz formuliert. कैसे Nebensatz को formulate किया जाता है? Kennen Sie? जानते हैं सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Was kommt zuerst? Ich kann. Subjekt, Dann Objekt Objekt. und Objekt, am Ende Verb, steht conjugated immer verb. ein konjugiertes Verb. Conjugated verb. Conjugate this verb. Conjugated verb. Conjugates verb. Conjugate this verb. Alles klar? Verstehen Sie? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. अब नेबेनजार्ट्स के चक्कर में हाउप्टजार्ट्स नहीं भूल जाना तुम लोग. A1 से हम No, sir. हाउप्टजार्ट्स पढ़ते आ रहे हैं. ओके. Sehr gut. Dann Ich bin müde.
Ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ। Welcher Satz ist das? ये कौन सा सेंटेंस है? Hauptsatz oder Nebensatz? Hauptsatz. Hauptsatz. Warum ist das Hauptsatz? ये Hauptsatz क्यों है? While Sentence structure. Second. Uh, Verb second. bleibt gleich. Der Satzstruktur bleibt gleich. Konjugiertes Verb steht immer auf Position 2 in einem Hauptsatz. हाउटजाट्स में जो वर्ब की पोजीशन है वो हमेशा सेकंड रहती है. second position पे होता सेंटेंस नेबेनजाट्स है या हाउटजाट्स है ये डिसाइड करता है वर्ब की पोजीशन. है. Verb की position. Verstehen सही Sie? बात Okay, है. Yes. dann. Weil ich müde bin. Welcher Satz ist das? Nebensatz. 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 Warum? Because while connector सबसे पहले आया है और verb जो है वो सबसे verb end में चला गया. Kommt im Sehr gut. am Ende. Konnektor. Dann Nebensatz. Yeah. Nebensatz. Konnektor plus Nebensatz. Und in einem Nebensatz, in einer subordinate clause, das konjugiertes Verb steht immer am Ende. जो Ende. वर्ब होता है वो हमेशा एंड में रहेगा. अब वो वर्ब कोई सा भी हो सकता है. सेकंड पोजीशन पर मौजूद कोई हेल्प्स वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है. ऑक्सिलिया वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है. इन्फिनेटिव वर्ब भी हो सकता है. मॉडल वर्ब भी हो सकता है. हर वो चीज जो सेकंड पोजीशन पर यूज की जाती है नेबेनजाट्स में एंड में यूज की जाएगी. अब वो कुछ भी हो सकता है. Alles klar, verstehen Sie? वो कोई सा भी वर्ब हो सकता है. वर्ब की कोई सी भी टाइप हो सकती है. आई होप कि यहाँ सवाल तक था सबको यहाँ पे. क्लियर होगा. किसी का कोई क्वेश्चन है महफूज? जी सर, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे तेरन पैरेंट वर्ब कैसे काम करेगा, सेपरेबल वर्ड्स किस तरह से काम करेंगे यहाँ पे. Trennbare Verb भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा. Zum Beispiel ich stehe auf, मैं उठता हूँ. schreibe ich hier, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए. Ich stehe auf. In diesem Satz auf Position 2 steht stehe. Second Position पर क्या है? Stehe. Stay. Und Präfix ist schon am Ende. और जो प्रीफिक्स है वो तो ऑलरेडी एंड में. बिल्कुल. तो हम प्रीफिक्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. In einem Nebensatz. Nebensatz में आप लिखोगे ich auf Stay. stehe. मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा. जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद वर्ब था अब वो एंड में चला गया. और प्रीफिक्स तो अपनी जगह रहेगा जहां वो ऑलरेडी था. ओके, alles klar? Zum Beispiel. नहीं सर. Zum एक Beispiel. दफा और समझा एक दो. दफा और बताता हूँ. kein Problem. Ich komme morgen zurück. Ich komme morgen zurück. इस सेंटेंस में zurückkommen, das ist ein trennbare Verb, ये separable Verb है. ओके. जी. अब in einem Nebensatz. Nebensatz में क्या होगा? Ich morgen Morgen. Morgen. Kommen. समझ गया सर. समझ zurück गया सर. बहुत शुक्रिया. komme. Zurückkomme. Ich mag es nicht. Alles klar? Alles gut. Sehr Ja gut. sir. Dankeschön. Kausar, also noch Frage, question? Ja, Sir, können Sie ein Beispiel mit Modalverb geben? Modalverb, बिल्कुल. Modalverb. Ich kann nicht kommen. मैं नहीं आ सकता. Ich kann nicht kommen. मैं नहीं आ सकता. Nebensatz. Ich nicht Nicht. kommen Kann. kann. Kann geht am Ende. Wegen Nebensatz. Nebensatz की वजह से. हर वो वर्ब जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद है
चाहे वो कोई मेन वर्ब हो, कोई haben हो, sein हो, मॉडल वर्ब हो, कोई सा भी वर्ब हो, egal. Das geht immer am Ende. वो वैसे ही उठ के कहाँ चला जाएगा एंड में. एंड Alles klar? कौसर ओके समझ आया? जय गुड. यस सर विलन नाम सर अभी एक तो और टॉपिक मेरा की सवाल था शुरुआत है. आ, महफूज. जी सर सर आपने अभी कुछ देर पहले एक चीज़ बताई थी अगर मुझे ये बोलना होता है कि आई एम नॉट श्योर तो मैं बोलता हूँ ich bin nicht sicher Ich bin nicht तो sicher भी क्या कहा जाता है und kann man auch sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich bin एक दफ़ा mir. दोबारा रिपीट Ich bin mir. ich Mir bin बिल्कुल. हाँ आई एम नॉट श्योर ओके Ich bin nicht sicher भी कहा जाता है, ओके. जबकि कुछ लोग इसको ich bin mir nicht sicher भी कहते हैं. लेकिन अभी आपने ऑब लगाया था इसके अंदर Ob इस बिल्कुल समझाते हुए बिल्कुल. वो क्या Ob था wenn du nicht sicher bist, जब आप श्योर नहीं हो किसी भी चीज को लेकर, then benutzt du जी ob. तो उस सिचुएशन में आप ob का यूज करोगे. वो किस तरह था वो थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर देंगे Ob means whether. zum Beispiel Ali hat eine Party. अली की तरफ एक पार्टी है. Und Ali fragt mich. अली मुझसे पूछता है कि Mahfuz kommt heute. महफूज आ रहा है आज. Und ich habe keine Ahnung. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि महफूज आएगा या नहीं. Sage ich. मैं कहूँगा Ali, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, या ob Mahfuz ich habe kommt. keine Ahnung ऑब महफूज कम ओके Ob Mahfuz kommt का ich मतलब है habe कि I ओके don't know whether Mahfuz is coming. Whether he's coming. verstehe मतलब वो आ रहा है या नहीं आ रहा. Ich bin mir alles nicht gut sicher. verstand ओके. ob के vielen ऊपर Dank ये जितने भी कनेक्टर्स हमने देखे, haben Mhm. wir fünf Konnektoren gesehen. ये सब कनेक्टर्स हमने देखे. इन सब कनेक्टर्स के ऊपर पूरा कंप्लीट टॉपिक है. एक टॉपिक वाइल के ऊपर भी है जो हमारा पूरा दिन, पूरा एक लेक्चर वाइल के ऊपर है, पूरा एक लेक्चर 10 के ऊपर है, पूरा एक लेक्चर वेन के ऊपर है. तो बहुत डिटेल में इन कनेक्टर्स को कवर करेंगे. ओके, इसकी फिक्र नहीं करें. alles klar, sehr gut. so I hope कि नेबेनज़ार्ट्स में और हाउटज़ार्ट्स में जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा. और was sind coordinating Konnektoren. कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं. was sind subordinating Konnektoren. सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं. इनमें भी डिफरेंस क्लियर होगा. alles klar. Yes, sir. wenn etwas nicht klar ist, कोई चीज़ नहीं समझ आई, then frag einfach, पूछ ले. अजय, अली नवाज, फरदीन, किरण, इकरा, कौसर, मुनीब, सुफियान, yes, alles klar. Yes, sir. नवीद, हरीबा, सुहेब, Yes, sir. sehr gut. Yes, sir. Dann, ich bin müde oder ich müde bin. Dann machen wir ein paar Beispiele. Example sentences को देखते हैं und formulieren wir ein paar Sätze zusammen. मिलकर कुछ sentences को formulate करते हैं. Zum Beispiel auf dieser Seite haben wir zwei Sätze, दो sentences हैं. Ich komme nicht zur Party. Das ist ein Hauptsatz oder Nebensatz? Outside. Hauptsatz. Outside. Ich bin krank. मैं बीमार हूँ. Ist das ein Hauptsatz oder Nebensatz? auch Hauptsatz Hauptsatz. But Beide sir, sind while तो Nebenseits लेगा ना? Nebenseits. बिल्कुल, ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग लिखा हुआ है रिबा. ओके. Okay, okay. Okay, sir. Ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा. Einsatz. Ich bin krank. मैं बीमार हूँ. Zweiter Satz. दूसरा सेंटेंस. Und beide Sätze sind Hauptsätze. ये दोनों sentences क्या है? Hauptsätze, यानी main clause. Dann verbinden wir beide Sätze mit while. अब इन दोनों sentences को while से connect करेंगे. Und ich vergessen komme Sie nicht nicht, zur Party und vergessen weil Sie nicht, ich इस चीज को krank मत bin भूलिएगा कि while ist ein subordinating connector. while एक yeah subordinating connector है und connector है सही बात kommt immer mit einem Nebensatz. yeah और हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को कैरी करेगा while. Mhm. Okay, then verbinden wir beide Sätze. इन दोनों sentences को connect करते हैं. Wie schreibt ich man? komme कैसे nicht लिखा जाएगा? Ich komme nicht zur komme Party Party. weil nicht ich krank bin While
सुआ इश्क पार्टी, क्रांति मैं पार्टी में नहीं आ रहा. वाइल, वाइल क्योंकि, वाइल इश्क मीन्स क्रांक बिन क्योंकि. yeah इश krank because bin, I am because I am sick, sick क्योंकि मैं बीमार हूँ. yes While means क्योंकि, because. Alles klar? Sehr gut. alles Dann klar auch zwei Sätze, दो sentences हैं. Ich lerne Deutsch. Ist das Hauptsatz oder Nebensatz? Hauptsatz Hauptsatz. Hauptsatz. Ich wohne in Deutschland. Deutschland Hauptsatz. Hauptsatz. auch Hauptsatz Verbinden wir zwei Hauptsätze mit while. अब इन दोनों sentences को while से connect करेंगे. ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch, while weil ich while in ich Deutschland in Deutschland wohne Sehr wohne. gut. Weil ich in Ich Deutschland in in Deutschland Deutschland wohne. wohne wohne. Sehr gut. मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne Deutsch. क्योंकि मैं जर्मनी में रहता हूँ. Weil ich in Deutschland wohne. While means क्योंकि, because. While means because, क्योंकि. क्योंकि. Und weil es ein subordinating Konnektor und kommt immer mit einem Nebensatz. और हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को फॉलो करेगा. हमेशा. Verstehen Sie? Naveed, has noch कोई क्वेश्चन? नवीद के बाद अरीबा. यस सर. सर ये आपने दोनों मतलब वाइल से पहले कॉमा लगाया, ये भी रिटर्न में बिल्कुल बिल्कुल. जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, Hauptsatz. आप schreiben Sie zuerst einen Hauptsatz. सबसे पहले एक Hauptsatz लिखते हैं. ओके. Dann steht ein Komma. उसके बाद एक कॉमा आता है. Dann ein Konnektor. फिर एक कनेक्टर आता है. Und mit einem Konnektor. कनेक्टर के साथ schreibt man immer einen Nebensatz. उसके बाद एक Nebensatz आता है. ओके. Das ist ein Satzbau. एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल सा. ओके. अरीबा. यस सर. सर बिकॉज के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर भी तो लगा सकते थे. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन फिलहाल हम नेबेनजार्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपको नेबेनजार्ट समझाना जरूरी है, इसीलिए हम नेबेनजार्ट्स वाले कनेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं. ओके. सर अगर यही अगर मैं देन लगाता तो फिर ich lerne Deutsch then ich wohne in Deutschland की सिंपल हो बिल्कुल जाता ना इसी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सही है होता. ओके. सही है वन मतलब मिनट्स दोनों मान सही है वाइल का इस्तेमाल कब किया जाता है? वन कॉम्ड देन क्यों आता है? 10 लेन भी बेटा. इन चीजों को आगे चलकर कवर करेंगे. अगर वाइल और देन दो अलग अलग वर्ड्स हैं तो इसका मतलब ये कि उनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ सिचुएशंस में किया जाता है. ओके. यही बात वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे जब हम इसके टॉपिक को पढ़ेंगे वाइल के. ओके. देन किसी और का क्वेश्चन था. सुहेब कोई क्वेश्चन? हजरत आगे. हाँ ताला भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये स्पीकिंग में, स्पोकन जर्मन में, तो अगर आप स्पोकन जर्मन में अगर मिनट्स मान जल्दी बोलें तो माइस्टेंस और नेबेनजार्ट्स. बिल्कुल. एक नेबेनजार्ट्स का इस्तेमाल डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है. इससे बच नहीं सकते आप. इससे बच नहीं सकते. ओके. ऑलराइट. ओके. इस टॉपिक ओके. के ऊपर इसलिए मैं इस टॉपिक को इतने आराम से समझा रहा हूँ आपको. इसीलिए benutzt man dieses Thema meistens im Alltagsgespräch, डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत ज़्यादा. ओके. alles klar. ओके. Danke. और किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? नवीद. नवीद alles klar. ओके. नवीद फागमल. जी सर, वो कवर हो गया था, मैंने कॉमा के बारे में पूछा था. Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter. Ich gehe nach Hause. मैं घर जा रहा हूँ. Ich bin müde. मैं थका हुआ हूँ. Beide sind Hauptsätze oder Nebensätze? Hauptsätze से. Hauptsätze. दोनों मेन क्लॉज है. verbinden wir beide Sätze mit while. while से कनेक्ट करते हैं. Ich gehe nach Hause, nach Hause. while ich weil müde bin müde bin. ich müde bin. Weil, sehr gut, weil ich ich müde bin müde müde bin. bin. Sehr gut. Bin steht immer am Ende. Okay?
Wohne steht immer am Ende. Wegen Nebensatz bin steht immer am Ende. Alles klar? Alles Yes, klar. sir. Dann er bleibt zu Hause. Was ist bleibt? Woher kommt aus bleibt? Bleiben. Bleibt kommt aus bleiben. Bleiben means Okay. To to stay. stay. To stay. Ich bleibe zu Hause. I'm staying at home. Hmm. Du bleibst zu Hause. Er bleibt zu Hause. वो घर पर है. Mhm. Er ist krank. वो बीमार है. Verbinden wir beide Sätze mit weil. Mhm. Er Er bleibt Er bleibt zu Hause, bleibt zu Hause, weil zu er Hause. krank ist. Weil, weil sehr er gut, er, weil er er krank krank ist. ist. Weil er krank ist. Sehr gut. Ist am Ende. Wegen Nebensatz. Nebensatz की वजह से. Wegen. benutze ich oft wegen. मैं अक्सर wegen का यूज करता हूँ. ओके. wegen का मतलब होता है हाँ because of. Because of Und das ist eine Präposition. ये एक preposition है. की ओके. वजह से. की वजह से. ये एक preposition है. लेकिन ये अक्यूजाटिव या डाटिव की preposition नहीं है. ये गेनेटिव की preposition है. ओके. तीन केसेस होते हैं अभी तक जो हमने सीखे. नॉमिनेटिव, अक्यूजाटिव और डाटिव. dative. लेकिन एक चौथा केस भी है जिसको कहा जाता है गेनेटिव. तो हम्म. इसके आर्टिकल्स अलग होते हैं. ओके. जैसे डेस वगैरह है. तो इसको आगे चलकर कवर करेंगे. और जो वेगन है, वेगन एक गेनेटिव प्रेपोजिशन है. ओके. Mhm. sehr gut. सो वेगन का मतलब होता है की वजह से. की वजह से. वजह से. सो अगर मैं कहूं कि warum ist steht immer am Ende, ist end में क्यों है? wegen Nebensatz. Nebensatz. wegen Nebensatz मतलब Nebensatz की वजह से. ओके. Dann ich esse पिज्जा. मैं पिज्जा खा रहा हूँ. ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. Weil ich How- Hunger habe. ich esse 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 Pizza. हाँ पिज्जा. Pizza. मैं पिज्जा खा रहा Pizza. हूँ. while Weil ich Hunger Ich habe. while ich Hunger 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 habe. 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 Hunger. क्योंकि मुझे भूख लगी है. habe steht am Ende. Warum? Wegen Verb im Nebensatz. wegen Nebensatz. Nebensatz की वजह से. while was ist while? while क्या है? while Subordinating clause. Subordinating. while ist ein subordinating connector. एक subordinating connector है. clause नहीं है. clause तो sentence को कहा जाता है. Yes, sir. Weil ist ein subordinating Connector Connector. und kommt immer mit einem Nebensatz. While हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को फॉलो करेगा. हमेशा. इसको ऐसे याद कर ले सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि while plus Nebensatz. While plus Nebensatz. Okay? Sehr gut. Dann haben wir Nebensatz gesehen. हमने देखा कि wie man Nebensatz formuliert. कैसे Nebensatz को formulate किया जाता है. Okay? Was bedeutet while? While का क्या मतलब है? While means because. Thus means that. Das means यानी कि when. When means If if ob. other, Ob means whether, whether. Obwohl. although, even though. Even though. although. Although. Alle sind subordinating connectoren. ये सारे subordinating connectors हैं. Und kommen immer mit einem Nebensatz. और ये सब connectors हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को follow करते हैं. हमेशा. अभी तक haben wir viele Beispielsätze gesehen. हमने बहुत सारे example sentences देखे. aber mit while. लेकिन while से इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ while Nebensatz को follow करता है. ये सब connectors जितने भी subordinating connectors हैं ये सब अपने साथ एक Nebensatz को फॉलो करते हैं और सब अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे while है when we einen Grund geben wollen, when we want to give a reason. Grund जब भी हमें रीजन देना होता है किसी भी सिचुएशन का
Warum kommst du nicht? तुम क्यों नहीं आ रहे? Ich habe eine Party. मेरी तरफ एक पार्टी है. Und du kommst nicht? तुम नहीं आ रहे. Warum kommst du nicht? तुम क्यों नहीं आ रहे? Gib mir einen Grund. मुझे रीजन दो कि warum kommst du nicht? तुम क्यों नहीं आ रहे? Dann gebe ich einen Grund. फिर मैं आपको रीजन दूंगा. Und wenn ich einen Grund geben will, अगर मैं आपको रीजन देना चाहूं, then benutze ich immer weil. रीजन देने के लिए, किसी भी एक्शन का रीजन डिफाइन करने के लिए, वजह बताने के लिए हमेशा while का यूज किया जाता है. Ich komme nicht zur Party. मैं पार्टी में नहीं आ रहा. क्यों? Weil. क्योंकि ich krank Ich bin. krank bin. मैं बीमार हूं. Ich glaube. मुझे ऐसा लगता है. Ich glaube. Glaube kommt aus glauben. Glauben means to believe. लगना या यकीन होना. मुझे यकीन है या मुझे ऐसा लगता है. Thus er müde ist. कि वो थका हुआ है. Thus means that. That he इसका is मतलब है कि tired. I believe that he is tired. मुझे लगता है कि वो थका हुआ है. के means that या das. Und das ist auch ein subordinating Konnektor. Wenn. Was bedeutet wenn? When means if. If And याद रखिएगा benutzt man when in Bedingungen. Bedingungen कहा जाता है conditions को. This is a conditional connector. ये conditional connector है जो conditions define करता है. Zum Beispiel अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा. Conditions define करता है. Zum Beispiel मैं गाड़ी खरीदूंगा. Ich kaufe ein Auto. कब wenn ich खरीदूंगा? Geld क्या कंडीशन है? habe, कंडीशन ये है कि जब अगर मेरे मेरे पास पास पैसे पैसे होंगे. अगर मेरे पास So पैसे होंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा. Ich kaufe ein Auto, wenn ich Geld habe. Wenn normalerweise sagen wir, अक्सर हम कहते हैं ich habe Geld. Ich habe Geld का मतलब है मेरे पास पैसे हों. Ich habe Geld means I will have money. मेरे पास पैसे हों. अगर मेरे पास पैसे हों. अगर के लिए क्या यूज किया जाएगा? Wenn. Und wenn ist ein subordinating Connector. Wenn तो एक subordinating Connector है. Und kommt immer mit einem Nebensatz. और हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को follow करेगा. Und in einem Nebensatz में das konjugierte Verb steht immer am Ende. और conjugated verb कहाँ होगा? हमेशा end में होगा. Alles klar? Verstehen Sie? समझ आ रहा है? Ich kaufe ein Auto. मैं गाड़ी खरीदूंगा. Wenn ich Geld habe. अगर मेरे पास पैसे हुए. Ich mache meine Hausaufgaben. मैं अपना होमवर्क करूंगा. Wenn ich Zeit habe. अगर मेरे पास वक्त हुआ. Habe ich viel Zeit. मेरे पास बहुत वक्त है. अब mache ich meine Hausaufgaben nicht. लेकिन मैं अपना होमवर्क करता नहीं हूं. सुफियान, अजय, फरदीन, हसन, इकरा किसी का भी होमवर्क अभी तक ग्रुप पर नहीं देखा है. महफूज तो कोशिश किया करे कि होमवर्क को ग्रुप के ऊपर yes sir. करके पोस्ट किया करे. ओके, sehr gut. Dann Okay. ob. Was bedeutet ob? Ob means weather, and we use this connector in the situations of uncertainty. Uncertainty means ऐसी situations जिनमें आपको complete information ना हो. Du bist dir nicht sicher. You are unsure about any situation. Kommt er heute? क्या वो आज आ रहा है? Nein, ich weiß nicht. मुझे नहीं पता. Ob er kommt. Ob er kommt का मतलब है कि I don't know whether he's coming. He Whether he's coming मतलब वो आज आ रहा है या नहीं आ रहा. Ich weiß nicht. मैं नहीं जानता. Ob भी एक subordinating connector है. Und kommt immer mit einem Nebensatz. और ये भी हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को follow करेगा. Verstehen Sie? Sehr gut. Dann obwohl. Was bedeutet obwohl?
obwohl means इवन दो even though. The और auf उर्दू में कहा जाता है हालांकि हालांकि. Ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich lerne Deutsch. हालांकि मैं थका हुआ हूँ. Obwohl ich müde bin. Warum steht bin am Ende? Bin end में क्यों है? वैगन Nebensatzes. नेबनजार्ट्स Wegen Nebensatz. Nebensatz. Wegen obwohl. Obwohl की वजह से. Obwohl ist ein subordinating connector. ये एक subordinating connector है. यह subordinating conjunction है. Obwohl kommt immer mit einem Nebensatz. और ये हमेशा अपने साथ एक Nebensatz को कैरी करेगा. हमेशा. Und in einem Nebensatz das conjugative Verb steht immer am Ende. और जो conjugated verb है वो हमेशा end में रहेगा. Verstehen Sie? I hope के यहाँ तक जो टॉपिक आज हमने सीखा कंजंक्शंस का वो सबको क्लियर होगा. Verstehen Sie, wenn etwas nicht klar ist, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, dann frag einfach. सिंपल पूछ लें. क्योंकि इस टॉपिक का पता होना बहुत ज़रूरी है. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Suhaib, hast du noch Frage, question? तारा भाई ये जो वाइल और डेन है दोनों बिकॉज है दोनों का मतलब. बिल्कुल. तो इसकी सिचुएशंस डिफरेंट होंगी कि इसकी किस बिल्कुल. सिचुएशन में यूज़ करें, क्योंकि हम किसी में भी एक दो सेंटेंस है उनमें हम डेन भी लगा सकते हैं, उसका जो वर्ब है वो सेकंड पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन देखो वो सिचुएशन. this thema, this is our next thema. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Okay. सुहेब. ओके. ऑलराइट. क्योंकि बिकॉज के लिए हम while का इस्तेमाल भी करते हैं सुहेब, then का इस्तेमाल भी करते हैं सुहेब, और da का इस्तेमाल भी करते हैं. One kommt while, one kommt then, one benutzt man da. Und was ist der Unterschied zwischen alle? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? Das alles lernen wir später in diesem Thema. इस टॉपिक में इन सब चीजों को कवर करेंगे इंशाल्लाह. सुहेब ओके. हसन, हसन फागे, हसन मंसूर. जी मेरा सवाल था कि अभी जो हमने कंजक्शंस पढ़ी हैं जैसे कि दास, वेन और एक और सॉरी while, obwohl. जी चलें इन दोनों का ही. अब जैसे दास, अब हमारे पास एक न्यूट्रल आर्टिकल भी है. वेन का WEN ये भी एक तरह से यूज़ होता है स्पीकिंग के वक्त. कैसे हम अभी आपके ख्याल से ये ज़रूरी है कि इनको हम स्पीकिंग के टाइम डिफरेंशिएट कर सकें, या ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं बिल्कुल. स्पीकिंग में अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, सो 10 एक आर्टिकल है, राइट. 10 एक आर्टिकल है, जबकि 10 एक कनेक्टर है mit 2s जिसमें 2s होते हैं. तो schriftliche Aufgabe में तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन beim Sprechen आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो जो सामने वाला है, सुनने वाला, वो सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को समझ लेता है, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता. ओके. बिल्कुल. तो इस चीज में इतनी कंफ्यूजन नहीं होती है बाय एक्सप्रेशन स्पीकिंग में. ओके जी. गुड. और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नवीद. सर एक वैन में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि जिस तरह अभी आपने बताया वैन, ये इफ के केस में बताया वैन बिल्कुल. इश फ्राई साइट हाबे, तो इसी तरह से एक वैन वो भी तो होता है अगर के बजाय एक होता है जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं होमवर्क कर लूंगा. एक ही बात तो है, वो भी ये भी कंडीशन है. तो ये इसकी भी स्पेलिंग यही है WENN एक ही वर्ड है. यानी अगर. वैन को इफ भी कहा जाता है और इसको वैन भी कहा जाता है, और इन ये दोनों वर्ड्स कंडीशन शो करते हैं नवीद. जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये भी तो कंडीशन डिफाइन कर दी आपने. ठीक है सर. तो व्हेन हो या इफ हो, ये दोनों कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं. ओके. बाय दोनों डिजाइन. इसमें हाबे फिर एंड में ही आएगा कि वो बिल्कुल. लेबन जेड से. बिल्कुल. एक ही ओके कनेक्टर यूज होगा इन दोनों के लिए, व्हेन. ओके. ओके सर. sehr gut. और कोई क्वेश्चन किसी का? काइंड ऑफ आगे. ओके. आई होप कि आज का टॉपिक सबको क्लियर होगा. अभी एंडन वी हॉइटिगे Vorlesung. आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं.
इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन आपके सर पे से जाना शुरू करे, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं आज के टॉपिक को। heute haben wir nur Konnektoren gelernt। आज हमने सिर्फ सीखा कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, Nebensatz क्या होता है, was ist ein Nebensatz, was ist ein Hauptsatz und was ist der Unterschied zwischen beide Hauptsatz und Nebensatz, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। Wie viele Konnektoren haben wir auf Deutsch, जर्मन में कितने कनेक्टर्स होते हैं। Was sind Subordinating Konnektoren, Subordinating Connectors क्या होते हैं। Und was sind Coordinating Konnektoren, Coordinating Connectors क्या होते हैं। आई होप कि यू रियली एंजॉयड दिस लेसन। काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें समझ आई होंगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, heute haben wir keine Sprechübung, we don't have any speaking exercise। आज कोई स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा आज हमने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर काफ़ी स्पीकिंग की प्रैक्टिसेस होंगी। ओके, तो उसको परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो beenden wir heutige Vorlesung, आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं। Und dann